The topic of discussion is macromolecules, and the subtopic is levels of protein organization. Here we have the structural organization of proteins. Proteins assume three levels of structural organization. First one is primary structure, second is secondary structure, third is tertiary structure, and fourth one is quaternary structure. Let's discuss first the primary structure of proteins. The sequence of amino acids combined in a peptide chain is referred to as primary structure. Like in this diagram you can see amino acids एक linear chain में join हुए हैं and this structure is known as primary structure. Just और इसमें कौन सा bond होगा? That would be peptide bond. Here we have a practice MCQ. Primary structure of protein shows folding, sequence of amino acids, coiling, and hydrogen bonding. And the correct option is sequence of amino acids. Next is the secondary structure of protein. The secondary structure of a protein is a regular coiling or zigzagging of polypeptide chains caused by H bonding between NH and carbonyl groups of amino acids near each other in the chains. Like secondary structure पे जो प्रोटीन है जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो या तो कॉइल करती है लाइक इन हेलिक्स में या फिर वो जिगजैग कर जाती है बीटा पेटेड शीट्स बनाती है कॉज्ड बाय द एच बॉन्डिंग और पहले जो था प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड थी वहाँ पे कोई और बॉन्डिंग नहीं थी यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ गई है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन दो ग्रुप्स के साथ होती है अमाइनो एसिड में दो ग्रुप्स मौजूद होते हैं एक अमाइड और दूसरा कार्बोनाइल सो यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. Another question is secondary structure of protein includes alpha helix, 3D folding, beta sheets, both A and C, and the correct option is both A and C. It includes alpha helix and beta sheets. Next is tertiary structure. Three-dimensional twisting and folding of the polypeptide chains results in tertiary structure of protein. अब वही जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट जब थ्री डायमेंशनल ट्विस्टिंग करते हैं दैट रिजल्ट्स इन टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. और अब पहले पेप्टाइड बॉन्ड थी देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई और अब जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस डाइसल्फाइड ब्रिज और आयनिक बॉन्ड भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. The last structural organization is quaternary structure. In quaternary structure, several protein chains or subunits are associated into a closed bag arrangement like this. वो जितना भी tertiary structure होता है वो मज़ीद closed bag arrangement में अपने आप को arrange करते हैं और इस तरह से coiling बना देते हैं. Another practice MCQ is which protein exhibits quaternary structure, and the options are albumin, gelatin, casein, and hemoglobin, and the correct option is hemoglobin. The last topic is degeneration of proteins. The structure of proteins can be disrupted easily by heat, change in pH, and under strong oxidizing or reducing agents. Under such conditions, the proteins undergo denaturation. Like denaturation of albumin is the most common example. जब भी प्रोटीन्स का टेम्परेचर चेंज होगा पीएच में चेंज आएगा या ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स के उनको इन्फ्लुएंस करेगा तो प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाएंगी. In this diagram you can see the irreversible denaturation of albumin. Here is water soluble albumin, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम उसको हीट करते हैं तो जो एल्ब्यूमिन है वो इनसॉल्युबल एल्ब्यूमिन में कन्वर्ट हो जाती है.
यहाँ पे जो था वो नेटिव एल्ब्यूमिन थी, कॉइल्ड स्ट्रक्चर था। जब डीनेचुरेशन हुई तो जो क्रॉस लिंकिंग थी, जो बॉन्डिंग्स थी, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई। Here is the importance of proteins. Proteins are the essential part in the formation of protoplasm. Nucleoproteins serve as carriers of heredity from one generation to the other, like histone proteins. Enzymes are biological catalysts. They are made up of proteins. Hemoglobin acts as a carrier of O2, it is also a protein, and gelatin obtained by heating bones used in bakery. Casein used in the manufacture of buttocks and buckets. So this was all about proteins. I hope you have understood the lecture very well, and thank you so much.